And remember, the ratio and proportion is just like fraction. Okay, just like fraction. If you remember how we did it fraction, it's just going, many concepts comes from there only. Okay, so remember, the chapter which we are going to start today is ratio and proportion. So now we are going to start the topic ratio. सबसे पहले let us discuss what is ratio and where the ratio is used. ठीक है, I'm just writing. Yes. Yes. Ma'am, I was not able to submit from 10 minutes. So ma'am, I've given the picture to Pooja ma'am. Why Pooja ma'am? If you know that paper is of maths, then why Pooja ma'am, beta? Ma'am, I have sent to you, but it is going in the way. Ma'am, it's going in PDF form. But if you are sending on WhatsApp, if you are sending anytime on WhatsApp, try to send not in PDF, send in pictures. If you are sending in WhatsApp, ठीक है, अगर आप WhatsApp में कभी send करते हो, तो math की copy तो it's fine बेटा. But when you are sending the work like for correction of correction of unit test papers, just send in the form of pictures. ठीक है, because you don't have much pages, you have only 1 or 2 pages, so that time you give only pages, don't give PDF, because PDF is stored in another place, pages is stored in another place, and the Google Drive which you have sent by the form, that goes in another place. So in mobile there are lots of pictures. तो अगर सबसे ज्यादा टेंशन पिक्चर्स की नहीं होती, द टेंशन कम्स कि कहीं लॉस्ट हो गई तब क्या करेंगे, कहीं लॉस्ट हो गई तब क्या करेंगे. सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई एम टेलिंग कि ट्राई टू सेंड pictures and try to attach in the same Google form only, जैसा attach वाला process होता है बेटा, ठीक है, क्योंकि उसमें safe रहता है. Fine, चलो, let's start the class without wasting much time. कोई बात नहीं, चलो, it's okay. Something went wrong. कोई बात नहीं, you did it, no, you have sent it now. Ultimately you sent it, no? Ma'am. Yes, somebody else speaking something. Yes, ma'am, I have sent you in your personal wall the image, and I'm having from the test. Beta, I have given the time 9 से लेकर 9-10 तक. I was continuously asking that questions only. कि जिसको problem है ask here, जिसको problem है ask here. अब now I have started the class, so I cannot take up the question. 10 minutes you can ask the student who joined early. I was asking from them only that do you have any question? Do you want to consult anything on the paper if you are not understanding? You people have joined late, beta. ठीक है. Suppose I told this out of 25, ठीक है, and I take another names like Noor. Noor scored suppose 25 out of 25 only. So just I took randomly the marks. So I took two students, Ayushi and Noor. Ayushi scored 23 out of 25 and Noor scored 25 out of 25. And I want to compare them. I want to compare them now. Now I am telling what is the ratio of their marks. So remember when we are talking about Ayushi and Noor, so here the comparison of their marks I am doing. So when I do comparison, I try to have the fraction form. Ayushi will be coming up, the marks will be coming up, Noor will be coming down, and it will be giving you the fraction here, fractional form, कि दोनों के बीच में कितना comparison है, कितना difference है. So here 23 and 25. Now how to write this fraction? This fraction sign will be converted as the form of ratio. This is the sign of ratio. The first number I write here and then I write it the second number. 23 ratio 25. This is the sign of ratio. This is the sign of ratio and we call it
is to. We call it is to. If I have to read it, I'll read it 23 is to 25, or I can read it 23 ratio 25. I can read it anything. Either I can read it earlier one or I can read it this one. Okay? Remember, ratio, when you are comparing two quantities, it is called ratio. Okay? Now comparison can be in any of the way. Comparison can be in any of the way, but remember always one thing, that when you are comparing, you cannot compare unequal quantities. Unequal quantities का मतलब, let me tell you, like किसी बच्चे के मार्क्स को कंपेयर कर रही हूं मैं, तो दूसरे बच्चे के मार्क्स से कंपेयर कर सकती हूँ, उसकी हाइट से कंपेयर नहीं कर सकती. ठीक है? किसी बच्चे का मार्क्स मैं दूसरे के वेट से कंपेयर नहीं कर सकती. आई कैन कंपेयर द हाइट ऑफ आयुषी विथ हाइट ऑफ नूर. I can compare weight of Ayushi with weight of Noor. I can compare the marks of Ayushi with marks of Noor only. But I cannot compare height of Ayushi with weight of Noor. Okay? Because whenever I am comparing, I should compare in same standard or same quantity. Okay? Remember always, I cannot compare unequal quantities. Always remember, क्योंकि हम तब जब भी comparison करते हैं, we compare with the similar quantities. ठीक है? Are you understanding till here whatever I discussed now? Write it down yes in the chat box. Please write it down yes in the chat box who has understood till here. Then I'll talk it about more, that what you have to write it down in the definition part and other things. Fine. Thank you, beta. अभी हम लोग क्वेश्चंस की तरफ नहीं आए. I was just giving you the introduction. Just a light introduction. ठीक है? चलो. Let's discuss what is ratio in the form of definition. What is ratio in the form of definition? So ratio means comparison of two quantities is called, I am writing here similar quantities, called ratio. Similar quantity, I have already explained it to you. What is similar quantity? Similar quantity means height will be compared by height of somebody else, weight will be compared by the weight of somebody else, then the marks of somebody will be compared by the marks of any other person, then only it is called the similar quantities. You cannot compare unsimilar quantities. ठीक है? वेट को हाइट से कंपेयर नहीं कर सकते, हाइट को वेट से कंपेयर नहीं कर सकते. There should be the similar quantities. ठीक है? Now I have told you the sign of ratio, the symbol of ratio is this, two dots. We call it in computer language colon sign. ठीक है? इसको colon sign भी कहते हैं. ठीक है? So symbol is this, which I have already made it. And how to read it? We read as is to. For example, if I write it here 2:3, so I'll read it, either I can read it 2:3, I can read it this also, or I can read it 2:3. And remember, beta, this concept of ratio finding is very, very easy. It's a very easy chapter if you understand one. अगर आप फ्रैक्शंस आता है तो आपको रेशियो प्रोपोर्शन बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत इजीली आप पिकअप कर लोगे. ठीक है? सो रिमेंबर, इफ यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट रेशियो, शुड वी कंटिन्यू? We have much time. Can we do some questions related to ratio, beta? Yes, ma'am. Easy शुरू. चलो ठीक है. Okay, so I took the screenshot of this page which I have just now written. Now I'll be discussing about कैसे ratio find out किया जाता है. ठीक है? चलो. अभी I am not starting any exercise. I am just giving you the brief review
of the chapter without coming on exercises. ठीक है, चलो पहले छोटे छोटे नंबर से हम लोग शुरू करते हैं रेशियो निकालना. ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक काम किया, क्लास 6A के बच्चे ले लिए. ठीक है, 6A के बच्चों के बारे में बात करें अभी हम लोग केवल. ठीक है, अब एक एक करके आई विल आस्क फ्रॉम यू ओनली, नेम बाय नेम, सब लोग अपने अपने कुछ ना कुछ आई विल आस्क एंड यू आई विल टेक आउट रेशियो. चलो, मेरी क्लास में है 21 बच्चे. ठीक है, 21 में आई हैव नूर, अभिसर्ग, अनिका and Anusha and all are there. ठीक है, I have just Rishit, Shivansh has also joined now. चलो, let's do one thing, one by one. नूर अपने नाम को अच्छे से रीनेम करो बेटा. नूर, अपने नाम को सिर्फ नूर लिखो, so that you will come alphabetically then. Noor, just rename your name properly. So first I am taking Abhisarg and Anika. Abhisarg and Anika, both of you unmute yourself. Abhisarg and Anika, both of you please unmute yourself. Yes, ma'am. Abhisarg. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Abhisarg and yes. Abhisarg, can you tell me what is your weight? Just approx your weight. Tell me. लगभग कितना वेट होगा आपका? 25 kg होगा. ठीक है, ओके, थैंक यू. अनिका, आपका वेट कितना होगा बेटा? I don't know. Might be 30. अनिका, what do you think? What will be your weight? Ma'am, I don't know. It might be 32 or 31. Listening? Yes, ma'am. 32 or okay, चलो 32 or 31. चलो ठीक है, I have written 32 suppose. ठीक है, it might be changing also, but I am taking 30. मैं 30 ले लेती हूँ, just for example. 30 ले लिया मैंने. ठीक है, now look at here. अभिसर्ग का वेट भी मिल गया मुझे, अनिका का भी वेट मिल गया. और सपोज अगर क्वेश्चन आया, फाइंड द रेशियो of Abhisarg's weight टू लिख कर आएगा, टू अनिका's weight. ठीक है, ये क्वेश्चन लिख के आएगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, अभिसर्ग का वेट 25 kg, अनिका का वेट 30 kg. एंड नाउ जिसका नाम पहले आएगा वो रहेगा ऊपर. ठीक है, किसका नाम आया पहले? अभिसर्ग का. तो अभिसर्ग आ गया 25 में. देन अपॉन, ठीक है, देन अनिका का वेट कितना है? 30. तो आई हैव रिटन हियर 30. ठीक है, नाउ रिमेंबर ऑलवेज that don't write kg and kg, but always see that are they in same quantity. ऐसा तो नहीं कहीं एक kg में है, एक ने ग्राम में बता दिया, कहीं एक ने मीटर में बताया, कहीं एक ने सेंटीमीटर में हाइट बता दी. तो जस्ट सी इट शुड बी सिमिलर क्वांटिटी. मैंने बिगनिंग में ही आपको बताया, इट शुड बी सिमिलर क्वांटिटी. सिमिलर क्वांटिटी के साथ साथ दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए. You cannot compare with anybody's. आपको जस्ट चेक करना है that okay, Noor is saying that ma'am she has measured her weight. Okay beta, ठीक है. So I'll come to you beta. So it's 25 and 30. ये आ गया, हमने लिख दिया. यहाँ पे kg हम लोग नहीं लिखेंगे, पहले चेक कर लेंगे that are they in kg only or not. Now I have written this. Now just check it by which table it cuts, because fraction can be always written in the simplest way. Fraction को हमेशा उसके simpler way में लिखा जाता है. So it will cut by 5. 5 5s are 25 and 5 6s are 30. Now it will not cut. It will be written only 5 by 6. Now 5 by 6 को अगर हमको रेशियो के फॉर्म में लिखना है, then what we will write it? We will write it 5:6. This is our answer. Understanding or not? Can you tell me yes or no? Please write it down in the chat box. Yes or no? If understood, write yes. If not understood, write no. Thank you. Thank you, everyone. You can simply write y also. I will understand why भी लिखोगे तो I will understand you have understood. ठीक है? तो चलो, ये हो गया आपका नॉर्मल रेशियो. सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया 5:6. बट रिमेंबर, कहीं क्वेश्चन को मैंने उल्टा कर दिया.
उल्टा कर दिया मतलब मैंने बोला नहीं मुझे अभिसर्ग से अनिका का वेट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अनिका टू अभिसर्ग. I want Anika to abhisarg. Then what we will do? I will just simply reciprocate. Reciprocal का मतलब होता है opposite कर देना, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर. It means now अभी तो हमारे पास कौन है? अभिसर्ग. I'm writing short form. अभी रेशियो अनि. ठीक है, अब मैंने चेंज कर दिया. Now I'm writing ani रेशियो अभी. Then how it will be? 5:6 की जगह पर आंसर आ जाएगा मेरा 6:5. Tell me, is it fine? Is it fine? I believe. ठीक है. Now this was the first example explained by me और generally सभी लोगों ने समझ लिया. अब I will take up next two students. अभिसर्ग हो गया, अनिका हो गया. Now Anusha and Anushka Sharma. Beta, please unmute yourself. Yes, ma'am. Okay, thank you. Now I am writing your name here first. Ma'am, screen is not visible. Screen is? Yes, ma'am. Screen is not visible. Now just see. Ma'am, it is visible. No, ma'am, it is not. But I think, 1 minute. Ma'am, she would be having network issue. That's why Network not. problem होगा. Yes, beta, network problem होगा because my side network is not problematic today. No, ma'am. I can have, but Ma'am, Mine also network is good, but ma'am, on the screen. but I can also not see. अच्छा 1 मिनट. ठीक है, चलो एक काम करते हैं, रुक जाओ. आई एम कनेक्टिंग विथ माय एयरटेल. ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ बस. ठीक है, जस्ट 2 मिनट. जब तक के लिए आप दोनों अपनी अपनी पॉकेट मनी रेडी रखिए. अनुष्का, व्हाट इज योर पॉकेट मनी पर मंथ? एंड अनुष्का, व्हाट इज योर पॉकेट मनी पर मंथ? तुरंत जल्दी से. What is your pocket money per month? How much do you get as a pocket money per month, beta? I'm talking about per month. I'm not asking for per day. Per month. Remember the word. Chalo. Okay. Anusha, can you hear? Yes, ma'am. Am I audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am, and the board is Yes, also ma'am. visible now. Yes, अच्छा ma'am. चलो ठीक You're है. audible. Okay. Yes, ma'am. Now board is visible. चलो ठीक है. Thank you. So Anusha and Anushka. Anusha, can you hear me? Anusha and Anushka. Yes, बेटा ma'am. प्लीज. हाँ जल्दी जल्दी चलो. हाँ अनुषा, अपनी पॉकेट मनी बताओ बेटा पर मंथ की. जस्ट 100 rupees. 100 रुपीज. चलो रुपीज में लिख दिया मैंने. आपने मुझे 100 बोला इसलिए मैंने यहाँ पर 100 लिखा. ठीक है. अनुष्का, व्हाट इज योर पॉकेट मनी बेटा पर मंथ? Ma'am, rupees 400. रुपीज 400. चलो ठीक है. अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर भी अनुषा ने अपनी पॉकेट मनी बताई और अनुष्का ने अपनी पॉकेट मनी बताई. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट टेक इट आउट रेशियो. यहाँ पर इस दोनों की मनी पहले मैं चेक करूंगी रुपीज में है कि नहीं. तो अनुषा ने भी रुपीज में बताई थी, अनुष्का ने भी रुपीज में बताई थी. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट टेक इट आउट रेशियो ऑफ देयर मनी, पॉकेट मनी व्हाट दे आर गेटिंग. अब हम क्या करते हैं, हम अनुषा टू अनुष्का निकालते हैं. तो यहाँ पर हो गया अनुषा एंड यहाँ ले लिया मैंने अनुष्का. ठीक है, अनुष्का पॉकेट मनी पूरा लिखेंगे. ठीक है, पहले वाले में हम पूरा लिखेंगे पॉकेट मनी. यहाँ पर भी आ जाएगा पॉकेट मनी. ठीक है. अब नाउ लुक एट हियर. अनुषा को कितना मिलता था? 100. अनुष्का को कितना मिलता है? 400. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल नॉट राइट इट डाउन दिस एज अ आंसर because this is not the correct one. Why it is not the correct one? Because it is not written in simplest form. First we will convert it into the simplest form. Now 0 0 cancel हो जाएगा, या आप 100 से भी कट कर सकते हो. तो it will give you 1/4. It means our answer is 1/4.
आंसर आ गया 1:4. नाउ इट इज द आंसर व्हेन अनुष्का रेशियो अनुष्का अनुषा रेशियो अनुष्का. बट सपोज द क्वेश्चन इज नॉट दिस, द क्वेश्चन इज अनुष्का ratio Anusha, then what will be the answer? The answer would be 4:1. Is it understood or not? Tell me yes or no in the chat box, please. Yes or no in the chat box, please, faster. Yes, thank you very much. चलो, now moving, सिद्धि क्या, sorry, कशिश क्या नहीं समझ में आया बेटा? Ma'am, can you please Kashish? explain once more? Ma'am, due to network issue, I was not understanding anything. अच्छा, so listen ना, listen, just see the recording. एक बार मैं आपको lightly बता देती हूँ, ठीक है? I just took it pocket money, what they are getting from Anusha and what they are getting from Anushka both. I have asked Anusha said that she get 100 rupees per month as a pocket money. Anushka said that she gets 400 rupees as a pocket money. Now I just want to take it out their pocket money's ratio कि उनको कितना मिलता है, as I want to compare it. So I am comparing by ratio. तो अनुष्का को मुझे कंपेयर करना, अनुषा को कंपेयर करना है अनुष्का से. So I have taken Anusha will be up, she gets 100, so 100 will be up. Then Anushka को मिलता है 400, so I took it 400 as a down number. Now 100 से I have cancelled it, it will coming as 1/4. So 1/4 is a simpler form now, so I'll write it 1:4. बट अगर क्वेश्चन को ऑपोजिट कर दिया गया बेटा, ऑपोजिट मतलब ये नहीं बोला गया कि अनुषा से अनुष्का का निकालना है, क्वेश्चन ने ये बोला अनुष्का से अनुषा का निकालना है, तो जस्ट वी विल रिवर्स इट. रिवर्स मतलब 4 ऊपर 1 नीचे. इज इट क्लियर कशिश? Yes, ma'am. चलो ठीक है, अब आते हैं बारी हम आगे की तरफ. अब नेक्स्ट 2 नंबर्स, हु आर दे? फटाफट जल्दी से अपना नाम देख लो. लेट मी सी, कहाँ गई? यहाँ पर अभिसर्ग हो गया, अनिका हो गया, अनुषा हो गया, अनुष्का. आयुषी एंड आयुष्मान, Ayushi and Ayushman, please unmute yourself. Ayushi and Ayushman. Yes, ma'am. Ayushman, Yes, are you ma'am. listening, beta? Are you listening, both of you? Ayushman. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Ayush, okay, fine. Ayushi, what's your height? What is your height? Ma'am, I don't- Can you tell me in centimeter your height? Will it be easy for you to tell me the height? ma'am, I didn't measure my height. चलो कोई बात नहीं, leave it. Then Ayushman also I'll not take it up height. चलो अब इसके पुराना वाला टेस्ट कौन सा हुआ था सैटरडे को? English. इसका पुराना इंग्लिश English. का. Have you received the marks? Have you received the marks? Yes, ma'am. हाँ, tell me the Yes, marks, ma'am. Ayushi. हाँ, how many marks you Ma'am, received? 26. 26. Okay. Ayushman, आप बताइए बेटा. Ma'am, 28. 28. Chalo. Now look at your. I got the marks of Ayushi and I got the marks of Ayushman, and both are marks only. So I cannot. I have to not change it. It is also in the marks. It is also in the marks. So just simply I will take it out. Ratio of their marks. अगर इस बार हम आयुष्मान को ऊपर लेते हैं, ठीक है? So this time Ayushman upon Ayushi, ठीक है? डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन बेटा, कि क्वेश्चन में किसको पहले पूछा गया है. जिसका नाम पहले आएगा वो ऊपर रहेगा, जिसका नाम बाद में आएगा वो नीचे रहेगा. So Ayushman got 28, so I'll write it down 28. Ayushi got 26, so I'll write it down 26. Now you reply what answer is the correct answer. I am not solving it, I am not telling it to you. आप लोगों ने मेथड देख लिया. Now you tell me what is the ratio of this answer. Please be little faster. Then एक थोड़ा सा different question करेंगे. Very good, Ishika. Ishika, I am asking answer of Ayushman and Ayushi beta. I am asking answer of Ayushman then Ayushi, है ना? So just reverse the number. जो आपने लिखा है वो just opposite हो जाएगा. Yes. Correct. Now
So absolutely correct. Everybody is writing the correct answer. Both the numbers comes in the table of 2 only. So यहाँ से जब कट करोगे तो ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 13. So ratio would be 14 ratio 13. लेकिन आयुष्मान आया और आयुष्मान ने बोला कि नहीं मैम आयुषी रेशियो आयुष्मान निकालिए. ठीक है, आयुष्मान said that ma'am take out the ratio of Ayushi versus Ayushman. Then what I'll do, I'll just reverse the number and I'll write it down 13 ratio 40. Yes. ठीक है, so this is Ayushman ratio Ayushi और नीचे वाले क्वेश्चन में I took it Ayushi ratio Ayushman. ठीक है, I hope you people are understanding this question. ठीक है, these are very simple question. ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंट. ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं आपसे ये बोलूंगी कि आप लोग जस्ट I'll take up पहले next set of student who are they. जल्दी करिएगा. ठीक है, 2 मिनट, एक टाइम बहुत कम है. हर्ष एंड इशिका फटाफट से बेटा. हर्ष अनम्यूट एंड इशिका अनम्यूट प्लीज फास्टर. Yes, ma'am. हाँ, हर्ष आपका स्टडी आवर बताओ एंड इशिका अपना स्टडी आवर मिनट्स में बताओ. जल्दी 120 minutes. अच्छा 120 मिनट मतलब 2 आवर्स पढ़ते हो आप है ना. 120 मिनट्स. ठीक है. आश आर यू लिसनिंग बेटा? Harsh Maurya, are you listening? Tell me how much you study in hours. He is not able to listen me. I don't have much time, beta. Harsh के बाद कौन है? नहीं, कशिश का नाम है ना बेटा. आप लोग पढ़ रहे हैं सीक्वेंस से. कशिश आप बताइए जल्दी से. आवर्स में बताना बेटा. कशिश, are you listening? कशिश के बाद है काव्या. आर यू लिसनिंग? डोंट रिप्लाई. हाँ, चैट बॉक्स में नहीं, तुरंत. हाँ बताओ बेटा. काव्या कितना देर पढ़ते हो आप आवर्स में बताओ. 2 hours. 2 आवर्स ही पढ़ते हो. इसको चलो हम 2 आवर्स ही ले लेते हैं. Ma'am, after breaks also. अच्छा, कैन आई राइट इट डाउन 3 आवर्स? क्या मैं 3 आवर्स लिख दूं बेटा? Yes, ma'am. ठीक है. नहीं, what I'll do now, just see. अब क्वेश्चन जो है वो यूनिट में सेम नहीं है. एक ने बोला मैं इतने आवर पढ़ती हूँ और एक ने बोला मैं इतने मिनट पढ़ती हूँ. तो सबसे पहला काम बेटा हम क्या करेंगे? बिफोर सॉल्विंग आउट रेशियो I will convert them into the same unit because Ishika says 120 minutes, Kavya says 3 hours. So either you convert minute to hour or you can convert hour to minute. But remember, किसी भी एक को convert करके same कर दो. So I am converting Kavya and Kavya will give us now 180. No, I am converting here. So it's 2 hour. It will be more easy now. ठीक है, it's 2 hour. So now दोनों के दोनों हो गए R में. Now I want to take it out ratio. तो इशिका का रेशियो हो जाएगा काव्या से. इशिका वर्सेस इट विल बी 2 ऊपर. मैम 12/13. 12/13 क्यों बेटा? 3 आवर्स है ना. 15. हाँ, तो कट करोगे ना उसको आप. अभी 12/13 ही लिखेंगे ना, उसको कट किया जाता है ना. और यहाँ पर अगर हमें काव्या का निकालना है, काव्या वर्सेस इशिका, it will give you 3:2. I hope you people have understood how to find it out ratio in a easier way. Yes or no? If yes, write it down yes and you may leave. Thank you very much. प्रत्युषी आप अभी गलत है आपका. मैम नॉट सिंप्लीफाई. तो बेटा क्यों नहीं सिंप्लीफाई ना? वी डोंट राइट आंसर इन दिस वे. बिगिनिंग में ही बताया ना मैंने. Yes, Anusha want to say something. Anusha, Anusha, you were raising hand. You want to say something? क्या? Okay, fine. चलो. Thank you, beta. Now you may leave also. I know that it's 2 minutes ahead of the previous timing. Please, you can leave.